It's mid-morning at Salwan Public School and the lunch break has just ended. Vishwa Mohan Tiwari has also just entered the school, an unusual place to visit for a retired Air Vice Marshal. But for Dadaji, as he is now lovingly referred to by the children and staff of the school, such visits are the focus of his entire life. He comes here to narrate stories to children every day. Children rush to greet him from all directions and flock around him, requesting him to come to their classroom first today. देखिए हमेशा ऐसे ही होता है, जब मैं आता हूँ ये बच्चे मुझे घेर लेते हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं दादाजी मेरी कक्षा में चलिए, दादाजी मेरी कक्षा में चलिए। तो मैं इनसे पूछता हूँ कौन सी कक्षा है, जिस कक्षा में कम जा पाता हूँ मैं फिर वहाँ जाने की कोशिश करता हूँ, इस तरह से ताकि सब बच्चों को मेरा लाभ मिल सके। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक लड़के से शुरुआत करते हैं। The stories he narrates are drawn from Indian classical literature and folklore. They are inspiring tales of famous personalities whom we all look up to. Stories similar to those told to us lovingly by our grandparents in our childhood. The children can't help but listen with rapt attention. In the middle of a regular school day, squeezed between math and science, they are transported into another world of gods and goddesses, animals, wisdom, honesty, bravery and values. गरीब कौन होता है मालूम है? करोड़पति भी गरीब हो सकता है। अपनी इच्छाएं जो पूरी ना कर पाए और उसके चलते परेशान रहे, वो व्यक्ति गरीब होता है। The stories fill them with wonder, evoke emotions, and most of all, leave behind a lesson, an imprint of what's good and bad, what's helpful and what's evil, justice and injustice, truth and lies, and the impact they bring to a person's life. In fact, all the universal lessons which we learnt the same way during our childhood. ये दादा दादी या नाना नानी ही होते हैं जो मानवीय संस्कृति को आगे ले जाते हैं। उनके पास समय होता है, उनके पास अनुभव होता है और उनके पास बच्चों के लिए प्रेम होता है। माता पिता के पास प्रेम तो है लेकिन बच्चों के लिए समय नहीं है और वो अनुभव भी नहीं है और वो सोच भी नहीं है। लेकिन नींव पहले पड़ जाना चाहिए, अच्छी नींव पड़ेगी तो बच्चे का महल अच्छा बनेगा। हमने दादा दादी का काम ले लिया है। हम वो कहानियाँ बच्चों को सुनाते हैं जिनसे बच्चों में संस्कार पड़ते हैं, जिनसे हमारी संस्कृति बच्चों को मानव बनाती है। Air Vice Marshal Tiwari is a celebrated author and thinker. He has written several books on Indian culture as well as on flora and fauna. After retirement from the Air Force, he began promoting Indian languages and literature and the cultural and social values associated with them. Troubled about the breakdown of the basic family unit and the absence of grandparents from this unit, he feared that the younger generation may be getting alienated from their roots. To do his bit, he began to organize culture lessons for older residents of his area way back in 1992. Specialists were invited to share their knowledge of Indian traditions, yoga, science and literature, hoping that they would in turn pass on this knowledge to their grandchildren. उन सबके साथ बातचीत होती थी और फिर उसके बाद बात हम करते थे कि आप अपने घर में बात करते हैं अपने बच्चों के साथ या किसी के साथ जो हम बात करते हैं, लेकिन उनसे ये पता लगा कि वो ज़्यादा बात नहीं कर पाते थे। उसके बाद फिर हमने सोचा और आपस में फैसला किया कि इस चीज़ में ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। In 2004, Mr. Tiwari and some of the others who shared his vision began to hold story sessions for children at a local library once a week. Soon, more and more people joined up in the effort, and a name was formalized. So first, by word of mouth, we told few friends around that we are going to start this session in Sector 15, Noida Public Library, where there was a library already functioning. We found that on the first day itself, on a Saturday evening, about 30 children got together. So we were so happy. Then another story session. Next week it went to 60, 70, and within a matter of 1 or 2 months, it came to 150
children. In the early days, the venue of the storytelling sessions kept shifting, as it was mostly done on donated premises. But soon they took up an offer to start a formal storytelling session in a school. From then onwards, the schools kept on adding. Here, Commander Chopra is in a storytelling session at a government secondary school in Nithari in Noida, on the outskirts of Delhi. Children are mesmerized and also participate with full gusto. कौन मेरे प्रश्न का जवाब देना चाहेंगे? हाथ उठाइए. 1 2 3 4. हाँ, तुम बताओ बेटे, पीछे खड़े. हाँ, तुम बताओ. असली हीरा वो अपने पास रख लेगा और नकली हीरा अपने मित्र के पत्नी को दे देगा, तो इससे वो अपनी दोस्ती भी बचाता है और हीरा भी अपना लेता है. ठीक है. Over time, holding these sessions in schools has emerged as the preferred way to work among children, as the focus is already on thinking and learning. We want to develop in children a habit to question, to think as to why so and so thing happened. In the same way, they talk about values. आपको अपना मन और दृढ़ पक्का करने की जरूरत है. काम करने वाले की निश्चित इज्जत होती है. He's been coming since last 3 years, and he's really dedicated, sincere, and he gets to the children in a very good way. And I must say that a person like him is really committed to value educations, because this is the in thing which the generation of today needs. He has done a lot to inculcate these values. मतलब कई बच्चे तो उनका जो अनुकरण करते हैं ना, अनुसरण, तो उनके द्वारा उनको मतलब काफी फर्क है कि बच्चा भी मतलब उस तरीके का दिखाई दे रहा हमें कि इसके ऊपर कुछ प्रभाव है कहानी का, किस्सा का. तो मतलब बच्चे जो उदंड होते हैं, शरारती होते हैं, वो भी थोड़ा सुधार हुआ है उनके उसमें. Truly, the stories have children enthralled. Once Dadaji begins narrating, they forget the pressures of studies and reconnect with their childhood. His stories are like something unique, and in the end we always learn something really good, and which always teaches us a moral value. हमें वो सिखाते हैं, वो हमारे लिए एक अच्छी सी एक महत्वपूर्ण बात होती है. अब वो हमारे गोल तक पहुंचने में हमें आसानी बात बताते हैं, ताकि हम अच्छे से अपने गोल तक पहुंच सकें, अपने उम्मीदों पे हम कायम हो सकें. मेन बात मुझे इनकी अच्छी लगी कि इनकी कोई जो कहानी है जहाँ पे हम हार मान जाते हैं, वहाँ पे भले ये हार ना मान के फिर भी उनका एक नया रास्ता दिखा के ये हमें नए रास्ते पे मतलब चलना सिखाते हैं. रोना आता है इनकी कहानी पे सर. फिर मैं सोचता हूँ कि इंसान कितना बदल गया, मतलब इंसान नहीं बदल जाते, दुनिया चेंज हो गई सर. The main point he wants us to learn is that we should be proud of Indian culture. It's very vast, and our ancestors, they were very good at science. Sometimes I feel that some parts from the stories of Dadaji make us feel like we are in an abyss named as world, and we have to climb up. We are in a well and we just know what is around us. We are not aware of everything around us, and to get that and to get a way to get that, he is telling us that way. जो मैंने सीखा, to have patience, to have control on myself. I've certainly noted a lot many changes in my child ever since she started listening to these stories. She has become more sensitive and understanding. She used to help me earlier also, but now she makes sure that whenever I need her help, she is by my side. Baal Vikaas Bhaaratee also donates books for setting up libraries to encourage the habit of reading among children. In fact, setting up these libraries is as important as storytelling. Books can be accessed by children at any time. Also, areas where story sessions are not possible, libraries generate the same reactions among children. This library at the government school at Nithari was set up a year ago and has got a number of children queuing up for reading. आता रहता हूँ हमेशा ही. कहानियाँ होती हैं, जैसे कभी इतिहास के बारे में होती है, भूगोल के बारे में. सब कहानी पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है. मैंने एक तो विज्ञान का चमत्कार और मीना एक लड़की की कहानी थी, वो सब पढ़ना, मतलब ये सब कविता वगैरह जो होते हैं सब पढ़ना मुझे अच्छा लगता है. कविता दोहे, कबीरदास जी के दोहे,
रहीम जी के धोए साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। यहाँ पे 450 करीब किताबें हैं और जैसे कुछ लोकल निठारी के बाहर के बच्चे, कुछ सेक्टर 31 के बच्चे और बी ब्लॉक, ए ब्लॉक सभी ब्लॉकों से बच्चे आते हैं और प्राइमरी स्कूल, जूनियर जो प्राइमरी स्कूल है सब बच्चे आके यहाँ पे से किताबें ले जाते हैं। छोटे बच्चे तो जो पढ़ना नहीं आता वो भी कोशिश करता है, फिर उनसे हम कहते हैं बुक पहले पढ़ के देख सुनाओ, उनको मतलब उस स्पेलिंग कर करके पढ़ता है लेकिन फिर भी आ जाता है कि बुक चाहिए। We have about little more than 100 branches. We can't go ourselves. So these branches we donate books to them. They start a children's library there and then just give an orientation. The local teachers or volunteers, they carry on and we try and visit them once a year just for check up the orientation, their progress. That is how it's going on. इस तरह से बच्चों में उनकी शिक्षिकाओं की तरफ से भी, उनके प्राचार्य की तरफ से भी बहुत हमें हर बार इस बात के लिए बधाइयाँ मिलती थी कि भाई आप लोगों ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि बच्चे आपके पीछे लटू हुए रहते हैं। Baal Vikaas Bharatee's work has been much appreciated and has attracted the attention of academicians and social workers who have voluntarily set up its branches. Today, it has 110 branches all over the country, as far as Cochin in the south and Dibrugarh in the northeast. Here at Vasant Kunj in South Delhi, eminent publisher and author Debendra Kumar Behel has set up the 111th branch of Baal Vikaas Bharatee by gathering the neighborhood children for a story session. बच्चों ने बहुत उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया है। अब मुझे लग रहा है कि ये एक आंदोलन बनेगा और बसंत कुंज में हम हर पॉकेट में इस तरह के क्लब खोलेंगे, बाल विकास भारती की शाखाएं खोलेंगे, जो यहाँ के स्कूल हैं वहाँ भी संपर्क करेंगे। Mr. Tiwari's team will conduct the first few sessions for Mr. Behel till his team is ready to take over. Though no formal training is imparted, demonstrations are given to develop the art of storytelling in a more focused way. मैं चाहता हूँ सारे बच्चों को संस्कार दिया जाए ताकि ये समाज मानव समाज बन जाए। यदि हम 10% बच्चे भी कर लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो मेरा विचार ये है कि यदि मैं 2000 शाखाएं खोल लूँ अपने जीवन में तो एक बुनियाद पड़ जाएगी, एक नींव पड़ जाएगी और ये काम फिर आगे बढ़ता रहेगा और हो जाएगा। एक शाखा खोलने के लिए मुझे कम से कम 3 स्वयंसेवक चाहिए। मुझे पैसे देकर कहानी सुनाने वाले नहीं चाहिए। ये काम हृदय से ही होता है। पुस्तकालय में मेरा खर्चा होता है, औसत पुस्तकालय 50,000 रुपये का आता है। ये काम तो मैं जब तक मेरे में ताकत है ये रोकने वाला नहीं है। तो बच्चों में इसका विशेष प्रभाव होगा, उनका चरित्र निर्माण होगा, उनको दिशा मिलेगी कि कहाँ हमें करना है और अपनी संस्कृति से कि कहाँ कहाँ हमारे विषय में, हमारे अपने देश में कहाँ कहाँ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं, उनसे उनका परिचय होगा। दरअसल जो सबसे बड़ी बात मैंने महसूस की वो ये महसूस की कि कोई भी व्यक्ति अपनी सामान्यतः सुख सुविधाओं में रहते हुए समाज के बारे में सोचे और समाज के साथ साथ नई पीढ़ी के बारे में सोचे। तो एक बेहतर समाज की जो कल्पना हम करते हैं वो सिर्फ हम कुछ लोग बेहतर कर सके उससे नहीं होता है। एक पीढ़ी की पीढ़ी अगर हम तैयार कर सके समाज की बेहतरी के संदर्भ में, तब तो हम उस तरह के समाज को पाने की कल्पना कर सकते हैं। ये विजन बहुत बड़ा है। मेरे ख्याल से मुझे ये अनुभव हुआ कि ये पहली बार इस तरह से सोचा गया है और उसके लिए लोगों को आना चाहिए। ये बहुत बड़ा उद्देश्य है, बहुत बड़ा आंदोलन है। इसको बड़े परिप्रेक्ष्य पर ले जाने की जरूरत है, जहाँ जिस समाज में जाति, संप्रदाय, इस तरह की चीजों को फैलाया जा रहा है, विष बोया जा रहा है, उन बच्चों को बचाने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। We are just young and we are learning, and the more we can gather from them, it is good for us. दादाजी की कहानी से आज ये सीख मिलती है कि कभी लालच नहीं करनी चाहिए, लालच बुरी बला है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीर सेनानी मतलब जो है हमारे भगत सिंह, फिर सुभाष चंद्र बोस, ऐसी कहानियाँ मुझे बहुत पसंद हैं। प्राणियों से मतलब हमें हमेशा दया दिखानी चाहिए,
वृक्षों को हमेशा मतलब काटना नहीं चाहिए और क्या नाम है हमेशा उनसे प्यार करना चाहिए। कभी गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहिए और मैं बड़े होके शायद IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ।